चलिए जी, फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है एक सर्कल जिसका सेंटर है पॉइंट O, साथ में हमें गिवन है AB जो है वो एक टेंजेंट है जो सर्कल पे टच कर रही है पॉइंट P पर। हमें जो प्रूव करना है कि इस पॉइंट P से जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दिस परपेंडिकुलर विल पास थ्रू द सेंटर O। लेट्स चेक प्रूफ ऑफ इट। तो यहाँ पर जो है हम एज्यूम करते हैं कि ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, दिस परपेंडिकुलर इज पासिंग थ्रू पॉइंट X हियर। तो बेसिकली आपका जो XP है दैट्स परपेंडिकुलर टू AB, और हम बोल सकते हैं कि ये जो एंगल है XPB दिस इज 90 डिग्री। साथ में हमें पता है सर्कल की थ्योरम है कि सर्कल में जो रेडियस है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। दैट मीन्स ये जो रेडियस है, दिस रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, दैट इज दिस एंगल हियर इज 90 डिग्री बाय थ्योरम। So basically OP is perpendicular to AB or angle OPB is 90 degree. Let's call this as observation number 2. So from observation 1 and observation 2 we can say that angle XPB and angle OPB both are equal to each other, and this is possible if and only if PX is overlapping PO, or this PX or perpendicular is passing through the center O, and that's what we had to prove, hence proved. I hope you have understood the solution well. I will see you in next video. Till then, tata, bye bye.